Welcome student in fourth session from your textbook chapter number 2 Microorganisms friend and foe. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the food poisoning and food preservation methods. So today we are going to discuss about the nitrogen cycle. Okay, in that nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere. Okay, how much percent of nitrogen are there? 78%. Nitrogen gas present in our atmosphere is also a part of many molecules essential to life like proteins, nucleic acid and some vitamins. Okay, nitrogen is found in other biological important compounds such as alkaloids and urea too. So in that nitrogen is thus an essential nutrient. Nitrogen is an essential nutrient or essential that constituent of all living organisms. And nitrogen cycle in nature from nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules. Means ये नाइट्रोजन जो elemental form में वो first convert होती है simple molecules में in the soil, okay, and water. So which get converted to more complex. Means soil और water के बाद में इसके बाद में जब simple molecules mixed up हो जाते हैं soil और water में, after that it again converted into more complex molecules in living beings. Okay, from there there is a converted into that living beings and again, okay, back again to the simple nitrogen molecules in the atmosphere. Means here is a full cycle is there. Okay, means you know very well that water cycle, so same like that. Okay, so look at here. This is the nitrogen cycle. Okay, this is the nitrogen cycle figure. So first we have to study about that figure and after that we will discuss in detail. So atmospheric nitrogen, okay, look here, this arrow indicate that atmospheric fixation. Okay, so nitrogen fixation are means two types. There is a biological fixation and atmospheric fixation. Biological fixation means bio means life. So nitrogen fixing bacteria fix atmospheric nitrogen. Means with the help of that bacteria, okay, nitrogen fixation are there. And after that it again bacteria in turn fix nitrogen into the nitrogenous compound. Means जो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स किया है फिर उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है एंड आफ्टर दैट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल और फिर वो किस में मिक्सअप हो जाते हैं इन द soil. Okay, and there is a compound of in the soil and take up by the plants. Means soil में क्या रहते plants रहते तो plants के मीन्स उसको एब्सॉर्ब करता है नाइट्रोजन के जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं फिर प्लांट्स को एनिमल ईट करते हैं एनिमल्स ईट द प्लांट्स. ओके, एंड फिर दैट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन और डेथ आपने देखा हुआ मीन्स जो एनिमल्स मीन्स जो कंज्यूम करते हैं प्लांट उसके बाद में नाइट्रोजनस वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होता है इन द दैट एक्सक्रीशन एंड मे बी डेथ ऑल्सो. तो फिर से ये जब इनका क्योंकि ये देयर इज ए लिविंग थिंग तो उसका डिग्रेडेशन होगा तो डिग्रेडेशन होके अगेन इट इज मिक्स इनटू द सॉइल. ओके, एंड फिर ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं उसके बाद में फिर से ये बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया. बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. ओके, फिर किस में कन्वर्ट कर देता है गैसियस फॉर्म में अगेन और फिर ये गैसियस फॉर्म से फिर से वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती. क्लियर. और सेकेंड मेथड क्या थी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन. सो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या होता है लाइटनिंग. लाइटनिंग मीन्स जो बिजली कड़कती है जब रेन होता है. ओके, रेनी सीजन जब रेन होती है तो बारिश के साथ में मीन्स ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो वो मिक्स हो जाती है रिएक्शन करके क्या बनाती है ऑक्साइड फॉर्म करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया और फिर कंपाउंड फॉर्म होने से डायरेक्टली कहाँ मिक्स हो जाता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल क्योंकि मीन्स दैट फॉल ऑन द लैंड. ओके, देयर इज ए सो अगेन फिर सॉइल में मिक्स हो और सॉइल में देयर इज ए प्लांट्स आर देयर सो प्लांट्स टेक एंड सेम प्रोसेस लाइक दैट. ओके, so these are called the nitrogen cycle. Okay, and how it is happen? Now look, there is a most commonly the nitrogen fixing bacteria are found in the roots of legumes plant. मतलब कौन सी रूट्स में फाउंड होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में. ओके,
राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, उनके रूट्स में, नोड्यूल्स में फाउंड होते हैं. सो दैट there is an special structures called the root nodules, and then these bacteria, for example rhizobium bacteria, the manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrate and nitrites. तो कौन से फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स is by a physical processes. And second, during the lightning, the high temperatures and pressure created in air convert nitrogen into oxide of nitrogen, means nitrogen oxide, like that. So these oxide dissolve in water, क्योंकि वो किस में मिक्स हो जाएंगे? वाटर में मिक्स होंगे. ओके, टू गिव द नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड. क्या फॉर्म करते हैं वो? मीन्स जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड फॉर्म हुए तो वाटर के साथ मिक्स होके क्या दे रहे हैं? नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड, and fall on the land. Okay, means fall on the land along with rain, and these are then utilized by the plants. Okay, by various life forms. And after that, means the nitrogen, once it is converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules. फिर से मीन्स क्या होता है जब ये नाइट्रोजन का इसने यूज कर लिया प्लांट्स ने, तो क्या होता है? सो प्लांट जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट, ओके, एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड. किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्लांट ने नाइट्रोजन को यूज किया एंड कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स विच आर यूज टू मेक प्रोटीन्स. तो जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से प्लांट उसका यूज करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अमीनो एसिड में. अमीनो एसिड एंड विच आर यूज टू मेक प्रोटीन्स. So some other biochemical pathway are used to make the other complex compound containing nitrogen, and these protein and other complex compound are subsequently consumed by the animals. तो ये जो भी plants मीन्स उसके जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कौन ईट करता है? एनिमल्स ईट करते हैं. तो एज इट इज वो कंपाउंड्स में ट्रांसफर होते हैं. ओके, एंड वंस द एनिमल और द प्लांट डाइज, फिर वो जब मर जाते हैं that animals and plants, okay, so that other bacteria in the soil, फिर से वो किस में आ गए? लुक हियर. ओके, एक्सक्रीशन जो उनका नाइट्रोजिनस वेस्ट रहता है एक्सक्रीशन के फॉर्म में, और जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ होती है, डाइज, एंड देन अगेन मिक्स इनटू द सॉइल. ओके, देन कन्वर्ट द, और फिर सॉइल में एक अदर टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. ओके, दैट वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट्स, फिर किस में कन्वर्ट होंगी? नाइट्रेट्स में. एंड देयर इज ए बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, एंड अगेन इट इज मिक्स्ड टू द एटमॉस्फेयर. क्लियर? एंड as a result of that nitrogen cycle, the percentage of nitrogen in the atmosphere is balanced. Clear this one? Thank you.